Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 6. Today we start SST in Geography chapter number 2, Latitudes and Longitudes. In this chapter we are going to learn about the axis of the earth and the poles. Number 2, the difference between latitude and longitude, the names of important latitudes, about heat zone of the earth, how to calculate time, the difference between local time and standard time, about time zone of the earth and international dateline. Globe. A globe is a small three-dimensional model of the earth. What is globe? It is a model of earth, three-dimensional. It is mounted on the axis. Axis पे वो mounted है. So that it can be rotated freely just like Earth. Just like Earth, our globe is also rotated very easily. It shows us the exact shape of the earth. It shows the exact shape of the earth. Spherical, slightly flattened at the poles and the buckling at the equator. The shape of the continents and the oceans are shown quite accurately on a globe. The different physical features and the places are also marked more or less clearly on the globe. That is clear. A globe is just like the earth. It shows all continents and ocean accurately on a globe. Okay. It is difficult to locate a place on a globe and correspondingly on the earth because the sphere does not have any side and corner. It is clear that a sphere does not have any side or corner. उसका कोई side और corner नहीं होता, एक जैसा होता है. We need to have certain points or line which can be used as a reference for locating places on the earth. What will we do? We need to have a certain points. कुछ points चाहिए होंगे or lines which can be used as reference for locating places on the earth. Look at this diagram. The earth axis, equator and the two poles. Look at the picture. This is axis. ये देखिए axis है आपका. And this is your north pole, this is your south pole, and it is equator. The imaginary line on which our earth rotates is called its axis. It passes through the center of the earth and its two ends are known as pole. Look at the picture. The imaginary line on which our earth rotates, हमारी अर्थ रोटेट करती है इमेजनरी लाइन पे. ये देखिए जो बनी हुई है इसको हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सिस. इट इज passes through the center of the earth. Look at the picture. It is the center of the earth, through the center of the and two ends. ये two ends हैं. South pole and north poles are known as poles. The poles towards the जो north की तरफ है उसे north pole कहेंगे and the pole towards the south is called south pole. These two poles are fixed point. These two poles are fixed point. Look at this picture also, north pole and south pole. Points reference that the earth's surface and all lines drawn with the respect of these points. These points से और लाइन हम लोग देखते हैं. The imaginary line
एग्जैक्टली मिडवे, ये देखिए जो इमेजिनरी लाइन होती है वो मिडवे में होती है। ओके, मिडवे बिटवीन टू पोल्स। अच्छा, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इक्वेटर की बात हो रही है। टू पोल इज कॉल्ड इक्वेटर। जो ये बनी हुई है इसको इमेजिनरी लाइन को हम लोग इक्वेटर। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हेवल्स। टू इक्वल हेवल्स में इसको डिवाइड करता है, हेवल्स और हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ of the equator is called north hemisphere and the part of the south is called the south। जो पार्ट इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो इक्वेटर से लेके साउथ की तरफ है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। Okay, a set of imaginary horizontal line drawn between the two poles। जो ये two poles हैं इनके बीच में जो horizontal line है, two poles and parallel to the equator, equator के parallel हैं, are called parallels of latitude। इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं parallels of latitude। Just see in this picture, ये जो लाइंस बनी है इनको क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इन नेक्स्ट पिक्चर यू कैन ऑल्सो सी latitude। they run in the east west direction। they run in the east west direction। another set of imaginary vertical lines drawn from north pole to south pole are called meridian of longitude। they run in north and south direction। जो north से south को होती हैं उसको meridians of longitude कहते हैं। Let's start latitude। The latitude of a place is angular distance of that place north or south of the equator measured from the center of the earth। इसको हम लोग कहाँ से measure करेंगे? at the center of the earth से। it is measured in degrees। इसको किस में करेंगे हम लोग? degrees में करेंगे। this distance between two degrees of latitude is 111 kilometer। each degree is divided into 60 minutes and each minute is further divided into 60 seconds। Let's see again। the latitude place is angular distance। क्या है? angular distance पे है। of the place north, good morning, north and south of equator measured from the center of the earth। center of the earth से उसको हम लोग measured करते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन डिग्री। डिग्रीज में हम इसको मेजर्ड करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड्स है ना, ये इनके बीच का कितना है? 111 किलोमीटर। ईच डिग्री इज डिवाइडेड, हर डिग्री जो है वो डिवाइडेड इनटू 160 मिनट एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। as the equator is starting point, it is considered to be zero latitude। ये देखिए zero latitude है equator पे, 0 degree। the angular distance of the poles from equator is 90 degree। और वो कितना है? वो 90 डिग्री है। ये देखिए पोल से उसके या हेमिस्फीयर से। The northern pole is marked 90 degree latitude while the southern pole is marked as 90 degree south latitude। वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये देखिए ये और ऐसे। ठीक है। parallel circle drawn at an interval of 1 degree। ठीक है, will this give us 90 degree parallel in each hemisphere। okay, the equator is the longest parallel। जो equator है वो
ये वाला जो है वो लार्जेस्ट पैरेलल है, सॉरी इक्वेटर ये है। The equator is longest as we move away from equator towards the pole and the length of the parallel increase। ये देखिए, इससे जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो जो है लैटिट्यूड वो इंक्रीज करेगा। पैरेलल जो है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर जस्ट 2 पॉइंट्स। नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। All latitudes in the northern hemisphere denoted by the letter n। जो नॉर्थ के होते हैं उनको किससे डिनोट करेंगे? n से। while the latitude in the southern hemisphere are denoted as the letter s। ठीक है, जो ऊपर के होंगे नॉर्थ की तरफ के होंगे उसको हम n से डिनोट करेंगे, और जो साउथ की तरफ होंगे इक्वेटर से लेके उन्हें हम लोग s से शो करेंगे। ओके ओके चिल्ड्रन, now read this chapter. In next video we will continue this. First of all, read about the equator, axis, north pole, south poles, havels. Okay, then we start the important parallels of latitude. Okay, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, the Arctic circle. We start in next chapter. Okay children, good day.